Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's documentary is on the pine forest of Rajdhani. This is in District Kotley, AJK. I'm going to give you a brief introduction of the area and the magnificent pine trees that were once roaming the area for generations and generations. But in the last 40 to 50 years, or probably 75 years, the erosion of this natural beauty has become a very concerning issue to the youngsters, to the new generation today. This natural wonder at one time was so magnificent that so many animals were freely within the forest, and such as tigers, deers, elephant, wild foxes, peacocks, and wild turkeys, and even monkeys have been known to be habitat of this area. This area was considered protective because the pine trees produced a resin, and which was again used for turpentine and other, and also so the climate was very acceptable. There wasn't much dry season during those time, and the whole of the area was well preserved in these natural disasters as we see them today. The latest fire in this forest has become a very concerning issue with the local, especially in Rajdhani, Jurai, Kala Dub, other places as well, because the vast amount of this forest has been under fire, and some of it is caused by man-made. And this has to be stopped, otherwise we'll lose these pine trees which have been there for, how many, 200, 300 years? So we need to protect this forest before completely it vanishes. And there are other potential for this forest as in terms of tourists and bringing in lots of revenue into the area, bringing in lots of wealth into the area, creating lots of job into the area. This has to be exploited. But if the jungle is burned completely and a few people just benefit, the whole of the community will suffer long term. So we need to stop this as soon as possible and preserve this natural wonder as it stood once again, like 200, 300 years way back. So this is the reason that we are doing this documentary, to give awareness to the general public and also the people within District Kotley. I ask you to support us to fully bring this forest back again and help us whichever way you can. कंट्रोल किया था अच्छा बकायदा है तो को मशीनरी सारे कोले असा बिल्कुल बिल्कुल ये स्प्रे आंदी है इंतजार करने हैं कि दरख्तां ही लगी हुई है पर असा सही ना सकने अच्छा इसकी हुन कुआड़ी असा वगैरह मंगवाई ने इसकी किसी तरीके नाल सासांगे ठीक है कब सो इसकी नहीं कपड़े ना इसकी इसकी गल करता कि हाथों को सीट बनाई दा ऊपर चढ़दा है मशीनां ने जरिए पानी मारता अच्छा ए जरिए सासांगे ठीक हुन दसो ना मैं क्या भी जिक्र करी ना कि उधरू एडे दूर कोई बंदा आशना ही नहीं आके लाने वास्ते इत्थे ने जेड़े रिहायशी बंदे ने इत्थे ने कोल काल ने ओवे लाने ता बंदा हुन जरा तुसा कुथा ने रहने ले असा भी तकरीब रहने पीछे रहने बंदा उस्ताद जी कियां नहीं लबना मैं तुसा दसो हुन जनाब असा सारे मैं हुन खुद एक सरकारी नौकरी करना है अच्छा मैं कोटली तो मुड़ी वापस आए हैं ठीक है अगे बड़ा कार है अच्छा अगी ना बुझिया ने अगी ना बुझिया मुड़ी वापस आए सही भी कम्मा पर से उठो तो पहुंचे ठीक है मैं तो आना है कि तुसा हुन एक ज़ाहिर हुन तुसा इत्थे रहने हो तुसा नजर रखी सकने हो असा हुन दूर रहने या बाकी लोग जेड़े दूर रहने महकमा भी नहीं आई सकना नहीं महकमा चले जाने अच्छा जंगले प्यारा दा कोई बंदा नहीं ना करी सकना ये गल जो ही सो तो कौन आग लगी है सो फटोवाड़ी था पहुंचो और बंदा ज्यादा दूर नहीं सही है जनाब आगे कंट्रोल करिंदी है तक ही ना उसा अच्छा नीचे उसा कंट्रोल करिंदी अच्छी रही ठीक है ये आज लगी हुई है ये आज लगी ने असा नीचे कोई नहीं जाने दिया कि जड़ा ना साईड़ी अखियां के थे मोरा ने बच्चे थे महकमे ने जे बंदे ने उन्हें कंट्रोल कीती है और इथनी इमाम कंट्रोल कीती है लेकिन महकमे वाले बंदे पहुंच गए अच्छा महकमे वाले बंदे ही पहुंच आए कंट्रोल कीती और लाने पता कौन लाने वाला जालिम ना बच्चा जड़ा ना और नहीं लगी लाने वाले दा तू कंट्रोल करने पे थल्लू लाई गया सी अच्छा इथे बंदे ऐसा आग साने हैं कंट्रोल कीती है ओ नीचे तो फिर लाई गया फिर एक कंफर्म है गल भाई इसका कि बंदा इथे नहीं है जाहिर है मैं हुन कुछ मेंशन ना करना अपर भी दो तरह कारण पार भी कारण नाल ही बुन कारण तुसा हर बंदे ने घर आराम से जाओ गल करो
कि ये गल चंगी नहीं ठीक है आराम ना पहले समझो असा महकमे ड्यूटी करना है महकमे ड्यूटी करना है अच्छा असा ड्यूटी करना है ठीक है ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅਸਾਂ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ मैं सो पूछना चाहूँ जी अग पहले लगी है उसने कोई सही से कोई नहीं हाँ जी सारे सारी बंद की थी आग सारी हो जी पिछली आग लगी ना असां 2 दिन रात लाई दा सही है ये इलाका सब चाहिए था जिले पहले आग स्टार्ट हुई घंटे को स्टार्ट हुई ये तकरीबन स्टार्ट हुई है जंडीगाले बिल्कुल जंडीगाले तो स्टार्ट हुई है जी जी जंडीगाले तो स्टार्ट हुई आग कंट्रोल करनी शुरू की तो असां रात पहुंची अच्छा कंट्रोल होनी तो हुन क्या प्रोसीजर है किस हिसाब से असां हुन इसकी असा ते बजाई वीडियो लेकिन मशीन है इस नाल पानी मारसा पानी मारसा बेचारा एक इस तरफ पे सोनी है सही वो जो पीछे आग लगी हुई है उसकी जो सोनी है दरख्त है जेडी लगी हुई है जनाब असा जड़ा इसके ऐसा करने हैं दरख्त जनाब लगी है वो लगी सारा सुबह कहना के लाग लगी सीधे ये सुबह तकरीबन 9-10 क्या टाइम से मैं ड्यूटी पर हूं सुबह लगी है बिल्कुल मैं देखिए यार मैं तुम्हारा लिखना तक क्या ना 9 बजे ने 9 बजे ना लगी 9:30 बजे असां तकरीबन इथे मुड़ी 10 बजे जड़ा ना पहुंची गए थे अच्छा अगर लग कंट्रोल करी बड़ा भरा क्या नाम सोना अब्दुल हमीद अमीर साहब भी बहुत जड़ी सोई नहीं था कोई ड्यूटी है या वैसे था आए हो हमारी सारे ड्यूटी है सीज फायर वाचर हमें लेकिन जो आग लगी है राजधानी नहीं मैं घर तो 2 बजे चलिया गया यासर गार्ड और फोन किया था फैक्टर साहब ने रबता किया कि जगह है लेकिन मैं घर तो निकलिया गया थले आगो हाजी सादक को शौको नहीं जीता थले कब्रस्तान तो पीछे थले पानी है इस पानी वाली जगह तो आग उठी है बल्कि उसको पार भी गई है रात भी सारी जी की लेकिन असा तकरीबन 25 तो 30 बंदे असा आग डकी है जी जी लेकिन उस तो बाद असा मुड़ी नथी नाड़े तो आग लगी फिर इससे जी रहे कहना कि बंदा जो आग लाना उसका कोई मेन मकसद क्या हो सी कोई जी अल्लाह उसकी हिदायत ही दिया कि नुकसान करना पाया जंगल में भी और आवाम ने भी नुकसान चिड़ी पतिंगा हर एक जिंदी चीज जलनी है बिच लेकिन उसकी अल्लाह हिदायत ही दिया है और अस कुछ ना कर सकते ना तो यार साढ़े कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि अस उसकी फौरन पौड़ी की ना होता है जंगल भी इतना है कि बंदा यार कोई कैमरा सिस्टम है जूं आग लगनी बंदा कैमरा चाड़ना उसकी वो बंदा तो घूमन तरफ कोई सहूलत शोलत उसने थी कोई नहीं जनाब संगी सहूलत ये है कि टैंकियां पानी वाली या दंदालियां और तो कुछ भी नहीं अच्छा बाकी कोई सहूलत नहीं बाकी कोई तो कह रहे हो कि जी आने इथों आग साने नीचे आग और लगी है गल ठीक है या नहीं ये गल बिल्कुल दुरुस्त है असा तो पूरा सही रहा गार्ड रियासत साहब भी मौके से थले असा नीचे भी बंदे गए असा मुड़ी थे पीछे रहे हैं लेकिन आपको कोई सब नहीं चली जंगल है लेकिन जाड़ बू है बंदा कुदर गया कुदर नहीं गया तो कह रहे हो कि बूटे ये बंदा बिल्कुल इस तरह हमले की थी अच्छा 3 हमले हुए थे समझे 3 हमले गए एक हमला पीछे आया दूसरा ये होया तीसरा वो होया ये रकबा असा बड़ी कोशिश ना था ही बचाया कि असा ना इथे गुजारा बाकी कह रहे हो कि जी आवाम है इथे रहनी जी कोई इस तरह कोई तावन करनी है कि नहीं बाकी आवाम जेडे कुछ लोग सवेरे लोग मजदूरी पर लगे जाने तो ग्राउंड जेडे घर में जो निकली है अच्छा जेडे घर होने निकली तावन करने बिल्कुल अच्छा थैंक यू बड़ा मेरे सोनो जनाब तक किसी के चीड़ जेडी सही छोड़ी ने बाकी मजीद नीचे पानी जो टैंकी तक ही सकते हो जिसे पानी रखा उन्हें मुड़ी है अगे साने में ये भी सासन मुड़ी तक किसी ने चीड़ है इस टाइम सड़ी गई अपना जिस किसी ने आगे इसकी लगी हुई है खाली करो टैंकी नहीं जोड़ो We've laid the video for you to see the mass damages that the fire has caused, and it's not has only caused for the human but also the animals that live within this pine forest, and it's absolutely saddening to know that, and it's, you know, sometimes one cannot have words for it. Why does this happen every year? And the number of trees number of pine trees that we lose, it's unprecedented. And as you said, the forestry department responsible for this, whether they are the part of the problem or, you know, whether they want to resolve this seems to be understood. But then again, you can see the lack of labor force, the lack of people to put the fire out, the lack of fire engines or other means by which this fire can be put out quickly. There isn't there's a lack of communication when this fire is being started, whether it's by locals, whether by its intention. So obviously, whatever it is, and with the dry season, and especially it was very hot this summer with 44 plus, as we have been told, it has caused a great damage. And how are we going to restore this? The only way we can restore this is by replanting again, you know. And people are just
mindless. They just chop, and never one single of them ever planted a tree in their probably life. So, we have to educate the people. They need to plant trees to preserve the forest, for not just for their own self, for their own children and the children's to come, and for other peoples. If we develop this area into tourists to come and visit and enjoy their area, and bring, as I said before, bring revenue into the area, which in turn will be the prosperity for the area. The people around this area, whether it's Rajdhani, Jirai, Damyar, Kala Dub, they're so naive. They just let these things happen year in, year after. They got to need to do something. It's their air they have to breathe. It's their forest. There are great potential benefits from this forest, and they've got to preserve their own environment. It's not individual cases. It has to be a collective community case to preserve and take care of this forest and let generations enjoy it. But unfortunately, at the moment, there's a very, very lack of understanding what this forest really means. So this is the reason that we created this documentary as educational purposes. And as I said, I hope you enjoyed, but it's saddening to see the damage caused by the fire. Taking the time out to watch, and may Allah subhanahu wa ta'ala and His Holy Prophet go with you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.